أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum my dear students. Let's get started with yet another class for you. We have started reading this poem written by William Shakespeare. It's about friends and flatterers, someone who is truly with you in every situation, whenever you are in difficult situation or any happy situation. And the other part is the flatterers. Flatterers are those person who falsely praise you, insincerely praise you when you are in a good situation, and they run away from you when you are in a difficult situation. So we have already read about this. Let's revise it for briefly. Everyone that flatters thee, everyone who falsely praise you, is no friend in misery, is somebody who is not a friend in your difficult time, misery. When you are a bad time, you are in a bad time, that person won't be a good friend. Words are easy like the wind. Words, speaking words is quite easy because it doesn't take any uh, uh, money or something. It doesn't worth anything. Faithful friends are hard to find. It's very hard to find a sincere friend, as I already quoted you on the quotation of Imam Ali alayhi salatu wasalam, where he says this: someone who is wretched in this world. In this reply, the Imam says that if someone who doesn't have a sincere friend is the one who is wretched. So this is how faithful friends are hard to find. It's a fact. Every man will be thy friend. Everybody will be your friend, whilst thou hast wherewith to spend. While you have the money to spend. The highlighted part in the blue color is the archaic use of English, old English, which means the way the modern English in which we speak. I have written over here, while you have money to spend. And but if stores of crowns be scant. Stores of crowns is a phrase for money, units of money you have. When they are scant means not enough. When they are short, dearth of money, when you are in a situation where you have no money, no man shall supply thy want. No man shall supply your needs. If that one be a prodigal, if the person we are talking about, if somebody is prodigal, he who freely spends money on somebody, prodigal, बहुत खर्चीला हो, bountiful they will him call. Those people call him generous, the flatterers. And with such like flattering, such like false praise, pity, but he were a king. Oh, if he were a king, as he is not a king, they suppose him to be a king. Kash wo ek badshah hota hai. This is the sort of false praise they used to put forward. But if fortune once do frown, but once if the fortune, the luck looks down upon you and disapproved with you, when you lost your money, then farewell his great renown. Your farewell जो है, जो आपकी the fame you have in your city or you among the people will also say farewell, goodbye to you. They that found on him before, those people who falsely praise him before, use his company no more. They don't need you anymore. We have kept it till here. Let's continue further. He that is thy friend indeed, he that यहाँ पे who is your friend indeed. Actually, he is the only friend. He will help you in thy need. Someone who helps you in your need. ठीक है? Then, if you are in a sad, if you are in a problem, he will weep. He will also cry with you. If thou wake, if you are worried about something and you are not able to sleep at night, he can't sleep. He cannot sleep as well. Thus, of every grief in heart, whatever problems you have, whatever agony, the pain you have in your heart, the problems you have in your life, he with thee doth bear apart. Doth yani old English, this is does in modern English. He with you does bear a part, share your sorrow and grief. These are certain signs. These are the signs, nishanat hai, certain means sure signs to know faithful friends from flattering foe. Foe means enemy. If somebody is flattering you. Now, what about the author? You have been given some
idea about the author as well. William Shakespeare 1564-1616 is considered the greatest playwright of all time. The plays he wrote more than 400 years ago are enjoyed by audience. सुनने वाले भी आज भी उसकी मज़ा लेते हैं, even today, आज भी. His plays and poems express everything from pain and death to desire, wisdom and happiness. विजडम दर्शन अक्लमंदी से लेकर खुशी से लेकर बहुत सारी चीज़ों पर उसने लिखा हुआ है. इन हिज राइटिंग्स में क्या है, शेक्सपियर इन्वेंटेड थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, उसने खुद हज़ारों वर्ड्स बनाए, ऑफन कंबाइनिंग लैटिन, फ्रेंच एंड इंग्लिश. So there is an evolution of the language as well. As the Urdu language is the evolution of the combination of Farsi, Arabic and Urdu itself, the Indian usage of language as well. So this is how language also grows. So he has also used the Latin, French and other English words to make different words. These words are a part of our everyday language now. These become part of our language. The poem Friends and Flatterers tells us that our true friends are not those who praise us in good times, means fair weather friends बोलते हैं जिसको phrase में, but those who help us even in times of need or grief. But actually those are our real friends who help us and share our griefs and always stand by you with you when you are in a difficult situation or grief. Now comprehension part, I have completed this one. If you have already done with the question answers, I'm going to skip it. Let me know if you have done it or not. If you have done so, then we will skip the other part. Now comprehension, complete these sentences in according to the speaker. What the speaker has said about friends and flatterers, you are supposed to complete this. Number one is everyone is your friend when you have money to spend. जब आपके पास पैसा होता है खर्च करने के लिए तब आपका दोस्त होता है हर कोई. Everyone is an indefinite pronoun because it doesn't specifically points out who we are talking about. This is why these are called indefinite pronouns. ठीक है, you have been already told about this, and these are always taken as singular. That's why we have used the verb is. हर कोई नहीं है. Everyone is your friend, sorry, हर कोई आपका दोस्त है. कोई एक्शन की बात नहीं कर रहे, हर कोई है, होने के बारे में बात कर रहे हैं, बी के बारे में बात कर रहे हैं. When you have money, जब आपके पास पैसे होते हैं. have के बारे में मैं आपको बताया था. थर्ड पर्सन के साथ हैज होता है प्रेजेंट में, और बाकियों के साथ जो होता है हैव होता है. नो वन विल कम, अब देखो फ्यूचर में है, कोई भी नहीं आता है. फॉरवर्ड मीन्स सामने नहीं आता है. टू टेक केयर, इन्फिनिटिव यूज़ किया. टू टेक केयर ऑफ यू. टेक केयर फ्रेज होता है या आपका ख्याल रखने के लिए. व्हेन द यूनिट ऑफ मनी यू हैव इज स्केंट, जब आपके पास पैसे का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है. स्केंटी मतलब बहुत कम होना. ठीक है, जैसे आपने ये वर्ड ज्योग्राफी में ज़रूर पढ़ा होगा. देयर इज स्केंटी रेनफॉल इन डिजर्ट्स. ठीक है, तो बहुत कम होता है, तो आपके पास दोस्त नहीं होते. यू आर प्रेज्ड, आपकी बहुत तारीफ़ की जाती है. देखो बी के साथ वी थर्ड यूज़ किया है, यानी द रूम इज़ डेकोरेटेड, द चेयर इज़ ब्रोकन. ठीक है, माई लेग इज़ ब्रोकन, इस समय टंग टूटा. इस तरह से आपको तारीफ़ किया जाता है, तो वही थर्ड यूज़ करते हैं. इज़ जनरस मतलब बहुत ही दिलबर जगह इसके कहते हैं. सिंपल. सखी यानी जो सखावत कहते हैं असल में. व्हेन यू स्पेंड मनी फ्रीली, जब आप बस दूसरों पर ऐसे पैसे खर्च करते हैं तो आपको बोला जाता है कि ये बड़ा दिलबर है या सखी है. ठीक है. देन द फोर्थ वन, व्हेन यू हैव मनी, देखो जब आपके पास पैसे होते हैं, यू हैव मनी, पीपल विल फ्लेटर यू सेइंग बाउंटीफुल, आपको कहते हुए कि बहुत ही बाउंटीफुल है, यानी बहुत ही जनरस है कहते हैं. एंड इफ़ यू वेर ए किंग, और काश आप एक बादशाह होते. इस तरह से आपको क्या करते हैं, बड़ी तारीफ़ें करता है. जैसे कि काश तुम फलान के बेटे होते, इस तरह उस तरह से बहुत बातें करेंगे. ठीक है, उसके बाद क्या होंगे, यूर फेम. फिफ्थ पार्ट, यूर फेम, आपका जो शोहरत है, जो आपका मशहूरपन है. विल से गुड बाय, वो भी क्या कहेगा, गुड बाय, क्योंकि फ्यूचर में है. देखो फेम विल से, वो आपका फर्स्ट चीज़ क्या, गुड बाय, अलविदा कहेगा टू यू, आपको. व्हेन यू लॉस मनी एंड यूर पॉपुलैरिटी गोज डाउन, जब आप पैसे खो देते हो और आपकी पॉपुलैरिटी क्या हो जाती है, नीचे चली जाती है, यानी गोज डाउन मतलब ख़राब हो जाती है आपकी शोहरत. ए ट्रू फ्रेंड शेयर्स, अब ए ट्रू फ्रेंड सिंगुलर है तो शेयर वर्ब है, स्पेस लगाए हैं. शेयर करता है. यूर नीड्स एंड ग्रीव्स, आपकी ज़रूरतों को शेयर करता है, ये नाउन है. एंड ग्रीव्स ये वर्ब है फिर से, और वो दुख महसूस करता है. एंड ऑलवेज बियर्स, और हमेशा उठाता भी है. ए पार्ट ऑफ यूर प्रॉब्लम्स, आपके प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं वो भी उसमें हिस्सा लेता है.
और लास्ट वन इज ए ट्रू फ्रेंड डज नॉट, आप नेगेटिव बनाया देखो बेटा, तो डज नॉट यूज़ करते हैं हम, पहले ही बोला आपको ग्रामर सीखा तो आप समझ सकते हो। ट्रू फ्रेंड डज नॉट स्लीप, नहीं सो पाता है। जे तो सच्चे आपको पता है, आपके माँ बाप से किसी से हकीकत पता करना हो तो अगर आपको कुछ हो जाए और आप कहीं पे हो, आपके माँ बाप को रात को नींद नहीं आती है, आपके दोस्तों को पता नहीं है, लेकिन हकीकत है माँ बाप को नींद नहीं आएगी, तो सच्चे दोस्त कौन है यहाँ से पता चलता है। ए ट्रू फ्रेंड डजन, क्योंकि हमारा कोई रिश्तेदार तो नहीं है पोएम लिखने वाला। ए ट्रू फ्रेंड डजन स्लीप, नहीं सो पाता है। व्हेन यू वरी अबाउट समथिंग एंड दैट कीप्स यू अवेक, जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हो, ठीक है। व्हेन यू वरी, यू के साथ वरी लगा हुआ है क्योंकि सिंगल यू यूज़ किया तो वो आपका फर्स्ट है। अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में फिक्र करते रहते हैं। एंड दैट कीप्स यू अवेक, और ये जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हो दैट सिंगुलर है, तो जो समथिंग क्यों यूज़ किया है कीप्स, तो कीप पे एस लगा है, जो आपको रखता है अवेक, ठीक है, जगाए रखता है। कैपिटल हियर हैव यू, आई थिंक यू हैव गॉट इट। लेकिन यहाँ पे जो माँ बाप के बारे में बोला है, खुदा उससे ज़्यादा करीब तर और उससे ज़्यादा आपको चाहने वाला है, कहते हैं इस बात को जानने की ज़रूरत है। Hope you enjoyed it. Keep it till here. We will continue, and do let me know whether you have done the comprehension part over here or not. If you have done so, we will move ahead with our next chapter. ठीक है, thank you for your kind attention. खुदा हाफिज़.